So here we are going through symmetry, and on GeoGebra we can see point symmetry. Fine. Now the next thing, after a simple figure, we are talking about regular polygons. So please share what do you understand by regular polygons. A closed figure with 3 or more sides. Anyone else? What Shardul told, it's polygon. है ना? I am talking about regular polygon. What is regular polygon? Polygon is a closed figure made of lines. All sides are equal in Sir, all length. sides are, Yeah. sir, they And have what about 180 angles? What about angles? Angles are also equal in measure. Equal measure. Equal in measure means equal angles, equal sides. Yes, very simple. Regular means, Sir, I have it out. हाँ जी, Uh, Sir, is every equilateral triangle is of 60 degree? every equilateral triangles. Measures 60 degree. Who will speak on this? What Harsh is asking? Yeah. A polygon is said to be regular if all its sides are of equal length and all angles are also of equal measure. Thus, an equilateral triangle is a regular polygon. Harsh, what is the sum of three angles of a triangle? Sir, 180 degree. So 180 we have to divide into three equal parts. How much will we get? Sir, 60. Yes. So 60 degree. Okay, fine. Rutuja is also present. Very Sir, good. I have a doubt. Ah, Sir, in isosceles triangle, how many lines of symmetry are there? isosceles triangle. Yes, sir. How many lines of symmetry are there? You will going to tell me why I should tell you all people? You are in class 6. I'm not. Just wait a minute. Okay, here. So now if we want to talk about polygons, if the angle is less than or more than 60, then it is not equilateral triangle. Yes. If the angles are not more or less than 60, they are not equilateral. चलो फिर से अपना सब वीडियो ऑन कर लो फटाफट. ओबीडियंट स्टूडेंट्स, देखिए ओबीडियंट स्टूडेंट्स के तो वीडियो ऑलरेडी ऑन है सभी के. Disobedient students अपना वीडियोस ऑन कर लें and keep your paper with you if you have. Now we are talking about three-sided figures. Yes, the first three-side figure. I have a triangle here in my hand. Will you tell me the name? Anybody, just fast. Give me the name of this triangle. Sir, isosceles. Isosceles triangle. Isosceles triangle. Anyone else? Sir, acute angle Sir, triangle. चलो और सारे नाम आने दो और घुमाते हैं थोड़ा सा. अब बताइए. Which triangle is this? Isosceles triangle. Right angle. Right angle. It's a right angle triangle. Yes, it's a right angle triangle. But if it is isosceles, जैसा कि कुछ student कह रहे हैं, Adamya is also telling. So isosceles, Adamya, what is isosceles triangle? Adamya. Adamya can't speak. Isosceles triangle.
If it is an isosceles triangle, and if we fold from between, we can see that we will get line of symmetry. Yes, but here यहाँ पे ये जो second वाला है ना, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों white हैं. So this is not an isosceles triangle. Okay, you know that isosceles triangle where two sides are equal. Any two sides are equal, है ना? कोई भी दो sides अगर equal होती हैं तो isosceles होता है. तो ये दोनों sides equal नहीं है because in an isosceles triangle we have one line of symmetry from middle. Okay, will you all take out an isosceles triangle cutout fast? आइसोलेस ट्रायंगल का कटआउट बना सकते हैं क्या? जल्दी से बनाइए फटाफट. Yes. बनाइए and do the cutout also. Take two sides equal. How we can do? How we can draw? You can take one side as you wish. You can take 7 centimeter, 8 centimeter. अभी मेन चीज है कि दोनों एंगल इक्वल करना है. Do you have projector? Yes, sir. हाँ, तो प्रोजेक्टर से एक इक्वल एक्यूट एंगल लीजिएगा. जैसे यहाँ पर जितना एक्यूट एंगल आप ले लीजिए 0 है, ये सपोज अगर मैंने ले लिया 70 है ना एग्जांपल, तो दूसरा भी यहाँ से जब आप 0 लेंगे, ये 0 यहाँ से लीजिए और फिर 0 से यहाँ पर भी 70 लीजिएगा. Means both the angles should be equal. अच्छा, अगर एंगल इक्वल नहीं ले सकते तो क्या साइड्स इक्वल ले सकते हैं आप? राउंडर है क्या सभी के पास? डू यू हैव राउंडर? ऋषि सिंह? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई राउंडर से जो है दो इक्वल साइड्स का आर्क कट करो. जैसे सपोज जो भी साइड ले रहे हो 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी ले लो 8 सेंटीमीटर. दोनों तरफ इक्वल साइड्स के आर्क कट करो. ऐसा भी कर सकते हैं आप. थोड़ा ज्यादा इजी होगा आपके लिए. एंड शो मी व्हाइल यू आर डूइंग. इरम, डू इट फास्ट. Sir, I am not having paper. Paper? We are studying symmetry. You don't have paper? Hiram, keep your video on. Okay, Ira and Rutuja are doing good. चलिए, how many of you have made isosceles triangle? Show fast. Ira is showing. Good. Wait a minute, Ira. Wait a minute. Aishi, do it fast. Isosceles triangle. Okay, Janvi have done good. Hello, sir. हाँ, अभिषेक कुमार. Ira, show again. Isosceles triangle. Is it isosceles? Okay, you have drawn line of symmetry also. Fine, very good. Okay, good, 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 good. Okay, it's still going on for some of you. Sakshi, yeah. Yes, Sir, Abhishek. sir. हाँ जी. Sir. वेरी गुड साक्षी, गुड वन. बहुत अच्छा बना है. इतना बड़ा ट्रायंगल है, क्लियर दिख रहा है हम सभी को. चलो इसको फोल्ड करो साक्षी मिड में से. Fold it from middle.
मिडिल से फोल्ड कर दीजिए, जैसे भी ईरा ने किया था ना, एकदम सेंटर से उसको हाफ हाफ कर दीजिए, फोल्ड इट बेटा, लाइक दिस वे, ऐसा मिड से ऐसा फोल्ड कर दो। So mine is done. अच्छा वो ऑलरेडी फोल्ड कर दिया है, ओके ओके। Isosceles triangle is having one line of symmetry. Now scalene triangle having, So scalene triangle has no lines of symmetry. scalene triangle is no line of symmetry. Okay. ऐसी इक्विवेलेंट ट्रायंगल भी आपको बनाना है, ठीक है। प्लीज आपके फ्री टाइम में भी ऐसे कटआउट्स बनाइए और जो सिमेट्री ऑब्जर्व करिए। Oh, which figure I have in my hand? Rectangle. Rectangle. Yesterday also we saw how many lines of symmetry in rectangle? 2 lines. Two. Two lines of symmetry. Yes, there are two lines of symmetry. One is horizontal and one is there are two lines of symmetry in a rectangle. Fine. ओके, अच्छा स्क्वायर कैसे बनाते हैं आप सब? स्क्वायर बनाना तो आता है ना? हाँ जी। Yes, sir. Sir, can we do symmetry from here? Diagonal side? Here in rectangle you can see diagonals. Symmetry is not possible, जैन, है ना? कल हमने देखा था, देखो रेक्टेंगल को आप अगर फोल्ड करोगे तो रेक्टेंगल में आपकी डायगोनल सिमेट्री नहीं बनेगी। Okay, sir. अच्छा चलो, स्क्वायर कैसे बनाते हैं आप लोग? बोट बनाते होंगे ना, नाव बनाते हैं जो लोग, पता है। ये इसको कर दें ऐसा, है ना, ये मिल जाएगा। We will get a square. If you fold a A4 from here and you just cut this bottom rectangle. Show me your squares fast. Sir, done. Square. Sir, I got it. Very good. So show me the square first. Fold it. Okay. Now square. Try to do the sketching. आप अपने sketch color से इसमें line of symmetry dot करिए जल्दी से. How many lines of symmetry? And those whose cameras off due to laptop, they may send me pics. वो लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप में अपना पिक भेजिए कटआउट्स का। लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच करिए उसमें। How many lines of symmetry Sir, I in have done. square? Sir, there are 4 lines. Correct. Four. Sir, we can also have diagonals, not folds, more than 4. Sir, there are 2 diagonals, one vertical and one horizontal. There are Aishi, show it. Aishi. Okay, Jayant is also doing. Jayant and Rajkumar, yes. Show it up. दिखाइए जल्दी. श्रीवत्स, तेजस, राई, वैष्णवी। वैष्णवी चलो एक स्क्वायर पेपर दिखाओ जल्दी से अपना।
So I have also sketched. Venkatesh, Pranati. Okay, Vaishnavis I can see, very good. Vaishnavi, which shape is this? Unmute yourself. हाँ, unmute करो mic. It is not square बेटा, ये rectangle है जो आपके हाथ में है ना? इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर ऑल साइड्स इक्वल होंगी तब स्क्वायर हो जाएगा। एक बार उसको ऐसा मिड से फोल्ड करके कट कर दीजिए। हो गया आयुषी, वेरी गुड। 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ओके ईरा, हर्ष, ऋषि, इरम गॉड, ठीक है, इसको स्केच करिए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सभी, थोड़ा डॉटेड कर दीजिए उसको स्केच पेन से। Now, who will tell me properties of square? Based on sides. Square की sides की क्या क्या properties होती हैं बताइए जरा। All sides are equal. हाँ, all sides are equal. Then all angles are how much degree? सर स्क्वायर से कोऑर्डिनेटरी है। All angles are 90. अच्छा, मैं जो भी कर रहा हूँ ना, सेम मेरे साथ कॉपी करिए सभी। इसको मिड से फोल्ड करिए, fold it from between, middle. Now which triangle you got here? Equilateral triangle. Equilateral triangle. No, Isosceles. Isosceles. Equilateral. It is an isosceles triangle. The middle one is the base is longer. चलिए इसको मिड से फिर एक बार फोल्ड करिए। You can see one line of symmetry for isosceles triangle. Now which triangle you got? Right angle triangle. Isosceles. राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब हो गया आपको 8th और 9th क्लास में प्रॉपर्टी आएगी कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट डैश। हाउ मच डिग्री? 90 degree. 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है हमें। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ पे हमको 4 राइट एंगल्स मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो 1 2 3 4। फाइन। So square, we have seen square is having 4 line of symmetry. Venkatesh, show your square. हाँ, very good. And do the dotting. Okay, उस पे आप डॉट करिए लाइंस, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए फिगर पे डॉट कर दीजिए। How you will do? 1 2 Sir, I don't. fine. now थोड़ा execute करना है। There are 4 lines of symmetry. 1 2 3 4. Square is having 4 lines of symmetry.
Now, if I have to draw a regular pentagon, what I should do? Pentagon. Length. Don't equal length. Yes. इस पे थोड़ा जरा सोच करके आइए. Tomorrow you just tell me. So time is over. Very good. Yes, the time is over here. So now tomorrow we will going to talk about rotational symmetry. Fine. So today again you just try to do the first exercise of our NCERT. Okay. जो हमारा Okay, first sir. exercise है. Okay, sir. There are questions about line symmetry. यहाँ पर देखिए एक punching का game दिया है आपके लिए. So you just try to do the punching in the papers which we have cut now, है ना? तो यहाँ आपको line of symmetry मिलेगा. Then tomorrow Harsh is going to, and all of you, if those who know how to do the cutouts, ना ये cutouts के through कुछ shapes बनाएंगे और उनका line of symmetry निकालेंगे. Okay, state the line of symmetry. How many line of symmetry are quadrilateral? 2. Yeah, speak. Very good. Anyone else? How many line of symmetry in quadrilateral? Quadrilateral is a four-sided figure, but we don't know. We can make as we wish. Quadrilateral में कैसे भी बना सकता हूँ, है ना? This is also a quadrilateral. Yeah, this is a quadrilateral. So quadrilateral we can't say. Fine. Then you have hexagon, circle. So try to do it. Go through the book. Thank you everyone for your participation today. Sir, how will decide the line of symmetry for quadrilateral? But quadrilateral में यही कह रहे हैं, not possible. In quadrilateral, no line of symmetry. Zero. Because quadrilateral मतलब यहाँ पर specific नहीं बताया ना हमको. अभी quadrilateral के हमने types देखे. Today we saw square, rectangle. Tomorrow we will talk about parallelogram. ठीक है? So basically quadrilateral is having no line of symmetry. Fine. So thank you everyone. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir.